Hello guys, welcome to the video and I hope you all are hale and hearty. Here I welcome you all to this channel, and today in this video I will tell you a structure that you can use to form the introduction of your task 1 in the IELTS so that you can score a good bands. As we all know that for making our task 1 as well as task 2 look a 9 band eligible task, we need to use a good range of vocabulary as well as a good range of grammatical sentences. So in this video I will share one technique that you can use and follow in order to make your introduction well defined. So please subscribe the channel and do like the video as well as post your comments after watching this video so that we can know your queries and post some more relatable stuff regarding your queries. So before starting this video I would like to revise you all the types of task 2 that we get in our IELTS. There are numerous types of the task that we get in our IELTS exam, like first is discuss both the views and give your opinion. To what extent you agree or disagree? Do you agree or disagree? Is it a positive or negative development? The essay that demands the causes and solutions to a problem, or the essay that asks you to challenge a statement, challenge a claim and give your opinion regarding that. So these are all types of the essays that we face in our IELTS exam, and these are the questions that we have to answer in our task. So in order to get a good band score, always remember that you have to write the opinions that match the statement of your task. Never ever go off topic while writing your task. Just properly read the statement for either 2 or 3 times, and after that do pre-plan your task, as pre-planning is essential in IELTS, because once you are done with writing your all ideas on a paper and forming a chart about how you have to maintain the flow of your ideas in the writing, so it will be easier for you to write down the task within the 60 minutes, because time management is the crucial thing in our IELTS. So try to do pre-planning and read the statement carefully for 2 to 3 times so that you can understand the question that is demanded in that statement. Like if sometimes like in one of the task, it was in an exam also, it was given that these days the robots are highly used in the daily life of the people. So according to you, what are the benefits of the usage of the robots for the old people, and are there any drawbacks related to this? So first is, हमने ये तो पढ़ लिया कि they are asking us about the advantages and disadvantages, but किसी ने ये बात का ध्यान ही नहीं देना कि उन्होंने एडवांटेजेस पूछे किसके लिए हैं, सिर्फ ओल्डर पीपल के लिए. सो इफ़ यू आर मेंशनिंग द एडवांटेजेस फॉर यंगर, फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, देन यू आर गोइंग ऑफ टॉपिक. सो प्लीज़ रीड द स्टेटमेंट केयरफुली फॉर 2 to 3 times before starting your task. Now returning to the structure of the introduction, here you are seeing a structure that is flashing upon your screen. Like first of all, there is a blank, represents an instrumental role on various fronts of life, even though it is widely accepted that. उसके बाद फिर एक ब्लैंक है और वहाँ पे लिखा हुआ है रीफ्रेज, द क्रुक्स ऑफ मैटर स्टैंड्स अनडिसाइडेड. उसके बाद फिर एक ब्लैंक है और वहाँ पे लिखा हुआ है थीसिस स्टेटमेंट. सो ये स्ट्रक्चर है आपकी इंट्रोडक्शन का. ट्राई टू यूज़ दिस स्ट्रक्चर इन योर इंट्रोडक्शन. नाउ एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे कि यहाँ पे पहले एक ब्लैंक है, उसके बाद लिखा हुआ है रिप्रेजेंट्स एन इंस्ट्रूमेंटल रोल. अब
जब भी हम राइटिंग टास्क में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, द फर्स्ट ऑब्स्टेकल दैट वी गाइज फेस इज़ राइटिंग द जनरल स्टेटमेंट. No doubt there is no hard and fast rule by IDP or BCE to write a general statement. Still, students do prefer to write a general statement in their task. So ये एक magic trick है to remove that problem. As we all know that we are given a statement that relates to some general topic like education, health, money, job, medical, sciences, research, development, mobile phone, gadgets. So the thing that you have to do is fill that topic in the first blank and copy the whole sentence as it is represents an instrumental role on various fronts of the life. Then there will be no need to write a separate general statement. इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि this thing represents an इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द लाइफ. मतलब ये हमारी लाइफ के हर एक पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स सम एग्जांपल्स, लाइक अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो हेल्थ से जुड़ी हुई है, हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कोई टास्क आता है, तो आप ब्लैंक में क्या फिल करोगे? हेल्थ. And your general statement will be like, health represents an instrumental role on various fronts of the life. And afterwards you can continue your next sentence of your introduction. If the statement relates to money, then you can write that money represents an instrumental role on various fronts of the life. Similar can be if the introduction is related to education, you can write education represents an instrumental role on various fronts of the life. And if it is regarding development, you can write development represents an instrumental role on various fronts of the life. So in this way you can remove the hurdle of writing a general statement. This is a very good method, so try to use this. You guys can also use to make some examples out of this statement and do post them in the comment section. I will feel it prestigious to read your examples regarding this. Now there is one more rule. As we all know that in each and every sentence of the English language there stands grammatical rule behind that. So इस statement को लिखने में भी एक grammatical rule है, that is the subject verb agreement rule. We all are aware about this rule, and if you are not aware, don't feel stressed. I will clear it out here only. So the subject verb agreement rule states that if our subject of the sentence is singular, then you have to write the verb that is plural. लाइक अगर आप लिख रहे हो कि जो आपके सेंटेंस का काम करने वाला बंदा है, हम सब्जेक्ट उसी को बोलते हैं ना जो काम कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है, इफ़ इट इज़ सिंगुलर देन योर वर्ब शुड बी प्लूरल. जो काम हो रहा है लाइक गो, ईट, डांस, ये सारे वर्ब्स हैं, सो ये सब प्लूरल होना चाहिए इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर. फॉर एग्जांपल, ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. ही गोज़ है बिकॉज सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, सो द वर्ब इज़ प्लूरल. सिमिलरली ये चीज़ हमारे टास्क 1 में भी अप्लाई होती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर गिवन वन लाइन चार्ट, वी विल राइट द लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स. वहाँ पे इलस्ट्रेट्स आता है, बट अगर वहाँ पे 2 लाइन चार्ट हैं तो हम क्या लिखेंगे? द लाइन चार्ट्स इलस्ट्रेट. सो सिमिलरली यहाँ पे भी रिप्रेजेंट्स लिखा है मैंने बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड अ सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली. तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, जैसे as mentioned in the all previous examples, health, money, education, development, ये सब कुछ सिंगुलर था तो रिप्रेजेंट्स ही आया है. बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, then there is also a rule that if your subject is plural in a sentence, the verb of your sentence should be singular. I repeat, if the subject is singular, the verb is plural. If the subject is plural, then the verb is to be singular. For example, अगर हम इसी अपनी जनरल इंट्रो की स्टेटमेंट की एग्जांपल लें, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट्स लिखा है. इफ़ आवर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एनिमल्स, लाइक एनिमल्स अब प्लूरल है तो क्या बन जाएगा? एनिमल्स रिप्रेजेंट एन इंस्ट्रूमेंटल रोल.
correct? I hope you have understood this, and if you have a doubt you can post it in the comments. Now coming towards forming the next introduction, अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारी इंट्रोडक्शन का वो कैसे अप्लाई करना है, आई विल क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग दैट. For example, if our task is, some people say university degree is necessary to get a good job. However, others deny this and say one can get a good job without a university degree. Discuss both views. सो हमारा जो टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस बोथ व्यूज़. अब हमने बोथ व्यूज़ को डिस्कस करना है, ठीक है. उसके बाद नाउ द टास्क इज़ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री है इट इज़ नेसेसरी टू गेट अ गुड जॉब. अदर्स जो हैं वो इसको डिनाई करें. डिनाई मतलब दे आर डिसरिगार्डिंग दिस, they do not agree to this point of view and say one can get a good job without a university degree. कि एक जो बंदा है he or she can get a good job without having a degree. अगर उसके पास कॉलेज की डिग्री है ही नहीं तब भी वो एक अच्छी जॉब यानी कि एक स्टेबल जॉब हासिल कर सकता है. सो अगर हम इसकी जनरल स्टेटमेंट की तरफ देखें तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करेगी, दैट दिस टास्क रिलेट्स टू द जॉब. कि हमसे ज़्यादा जो ओपिनियंस हैं वो जॉब के बारे में डिमांड किए गए. सो हमारी जो जनरल स्टेटमेंट है वो जॉब पे भी बन सकती है. द अनदर थिंग दैट कैन बी ट्रू अप टू 70% इन दिस इज़ दैट अवर जनरल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड ऑन द एजुकेशन. हम एजुकेशन पे भी फॉर्म कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. सो तीनों जो हैं हमारे ये टॉपिक्स हैं वो जनरल स्टेटमेंट के लिए सूटेबल हैं. जॉब, एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. नाउ कमिंग टू अवर इंट्रोडक्शन. अब फर्स्ट डैश में हमने क्या फिल करना था, जो सेंट्रल टॉपिक है उस स्टेटमेंट का. हेयर इट इज़ जॉब. सो हमने क्या लिख दिया, जॉब रिप्रेजेंट्स एन इंस्ट्रूमेंटल रोल ऑन वेरियस फ्रंट्स ऑफ द लाइफ. एज द सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर सो द वर्ब इज़ प्लूरल. ओके. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारे स्ट्रक्चर में, इवन दो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट. अब यहाँ पे हमने दैट के बाद क्या करना था, अपनी स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके लिखना था. रीफ्रेज का मतलब होता है जो हमारी स्टेटमेंट है या तो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करो. अगर उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना या फिर इंडेफिनिट टेंस ऐसी चीज़ें अप्लाई करना, या फिर आप क्या कर सकते हो कि सिनोनिम्स ऐड करके उस जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा लिखो. मतलब हर एक वर्ड का एक नया सिनोनिम लिखो. सिनोनिम मीन्स द वर्ड विद द सेम मीनिंग. सो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेज करें सो देयर आर न्यूमरस आइडियाज़. व्हाट आई हैव रिटन इज़, even though it is widely accepted that tertiary education provides professional stability to a person. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख दी कि ये माना गया है कि जो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है वो कैसे आ सकती है, टर्शरी एजुकेशन. टर्शरी एजुकेशन मीन्स यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन. वाइल अ फ्यू स्केप्टिक्स कौन होते हैं, जो किसी स्टेटमेंट से डिनाई करते हैं या फिर किसी स्टेटमेंट के ऑपोजिशन में जाते हैं. स्केप्टिक्स होते हैं डाउट करने वाले पीपल. अ फ्यू स्केप्टिक्स डिनाई दिस एंड क्लेम दैट स्टेबल जॉब कैन बी अचीव्ड विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री. कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी अच्छी जॉब है इट कैन बी अचीव्ड विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री. तो हमने सेम वही फार्मूला यूज़ करके अपने इंट्रोडक्शन को हाफ लिख लिया. द नेक्स्ट सेंटेंस एज पर द स्ट्रक्चर वाज, द क्रुक्स ऑफ द मैटर स्टैंड्स अनडिसाइडेड. क्रुक्स ऑफ मैटर क्या होता है, सोल्यूशन किसी चीज़ का. सो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया था. अभी इसका जो क्रुक्स ऑफ द मैटर है, जो इसका सल्यूशन है, वो अभी भी अनडिसाइडेड है. उसके बाद हमने क्या लिखना था, अपनी थीसिस लाइन. तो यहाँ पे थीसिस लाइन क्या बन गई, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ द ओपिनियंस बिफोर रीचिंग अ मीनिंगफुल कंक्लूजन. सो थीसिस लाइन वही होती है ना जो हमारी ऐसे के सेंट्रल ओपिनियन से जुड़ती है, जो हमारे ऐसे ने डिमांड किया हुआ था. अगर यहाँ पे होता डू यू अग्री तो हमारी थीसिस लाइन क्या बन जाती, येस आई डू अग्री टू द लेटर स्टेटमेंट दैट अ पर्सन कैन गेट अ गुड जॉब विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री
ओके, सो ऐसे ही आपकी जो थीसिस लाइन है वो किससे मैच करेगी, आपके जो टास्क का ओपिनियन है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। तो हमने ऐसे अपने हम टास्क में ये स्ट्रक्चर यूज़ करके इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट feel free to post a comment in the comment section below, and I will feel free to to clear all your queries. Do like the video guys and subscribe to the channel to get more good stuff regarding the IELTS.